Assalamu alaikum, my dear students. Hope and pray you are all in the pink. So, yesterday we talked about the poet D.H. Lawrence and we talked about the introduction of the poem, Last Lesson of the Afternoon, composed by D.H. Lawrence. So, in this video, I'm going to explain the poem line by line. But before starting the poem, let me tell you one thing that students, this is both for the teachers and students as well, that the last lessons of the afternoon are always boring and tiresome due to the weariness caused by the hectic day. So there is unwillingness for sharing and getting knowledge from both the sides. Teachers are unwilling to teach and students unwilling to learn. Now let's go through the poem and we'll try to find out the similar situation, whether students are really unwilling and the teachers are unwilling in the last lessons, right? So here we go. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and stranded apart? My pack of unruly haunts, I cannot start them on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can haul them and urge them no more. So my dear students, the poem begins with a tune of bitter desperation, boredom and weariness. The speaker of the poem is a teacher who seems to be tired and knackered and sick of his job. The poem sheds light on the classroom situation in the last class. The poem also describes the disappointment of a teacher who finds his students unwilling to learn in spite of all his efforts. That's why the poet says that, when will the bell ring and end this weariness? यानी यहाँ पे ये rhetorical question से इस poem को start करता है. There is an introductory statement at the very beginning of the poem. यानी the poet is impatiently waiting for the bell to ring. यानी वो गिनती बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था and end this weariness. He wanted to get rid of this dullness. Weariness means, students, dullness, boredom, tedious, right? Tired. ठीक है? So ये इस weariness से छुटकारा पाना चाहता है. He wanted to get some relief from his boring and tiresome work, because the students are not willing to learn anything. ठीक है, वो बेकाबू हो रहे हैं. That's why वो interested नहीं है, उनमें कोई curiosity नहीं है. That's why ये इस weariness को खत्म करना चाहता है. That's why he is anxiously waiting for the bell to ring. How long have they tugged the leash and stranded apart my pack of unruly haunts? Beautiful. यानी यहाँ पे आप देखिए, the poet has used metaphor. यानी ये students को compare करता है haunts के साथ. Haunts, you know, haunts means hunting dogs. And he considers himself a hunter. There is a comparison. खुद को ये hunter के साथ compare कर रहा है और अपने students को haunts के साथ compare कर रहा है. लेकिन ये जो haunts है ये unruly है. They are wild. They are uncontrollable. बेकाबू जिसको हम बोलते हैं, ये unruly है. और my pack means group. My pack of unruly haunts. यानी ये अपने students को बोल रहा है, ये wild है. They are indifferent towards studies. How long have they tugged the leash? Now what they are doing, these haunts
have been pulling the leather strip. Tugged means pull, drag करना, खींचना. Leash means, leash का मतलब ये actually एक it's a leather strap for holding or controlling horns, जिसको हम पट्टा बोलते हैं. How long have they tugged the leash? कब तक, यानी ये काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, इस पट्टे को खींच रहे हैं. एंड स्ट्रैंड अपार्ट, यानी इसको जोर से खींच रहे हैं, इसको तोड़ना चाहते. दे आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री. ठीक है, ये वहां से एस्केप होना चाहते, फ्री होना, ये आजाद होना चाहते. दैट्स वाई ये इनको बोल रहे हैं ये अनरूली हॉर्न से. ठीक है, दे आर पुलिंग दिस लीश, दे आर टगिंग दिस लीश, दे वांना जस्ट escape, they wanna just flee, right? My pack of unruly horns, I cannot start them again on a quarry of knowledge, they hate to hunt. अब इसको कोई वो रे ऑफ होप नजर ही नहीं आते, क्योंकि ये बोल रहा है आई कैन नॉट सेट देम ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज. अब मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता हूं, नहीं भाई आपको शिकार करना है. क्वेरी का मतलब होता है इट्स एक्चुअली एनी एनिमल और बर्ड विच इज हंटेड, जिसको हम शिकार बोलते हैं. ठीक है, या आप क्वेरी को और एक मीनिंग इस ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्च. ठीक है, आई कैन नॉट स्टार्ट देम ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज, दे हेट टू हंट. यानी ये हॉर्न्स, ये शिकारी कुत्ते हंट करना ही नहीं चाहते, ये शिकार करना ही नहीं चाहते. अब इसमें हंटर क्या कर सकता है, ये ऐसी बात है, when the learner is not ready to learn, there remains no point in forcing him. One cannot coax him, one cannot force him. No, you have to learn, you have to just learn this thing. जब उसमें वो कोई क्यूरियोसिटी है ही नहीं, उसमें वो काइंड ऑफ वो zeal and zest है ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते. It becomes dead impossible. I can haul them and urge them no more. अब इसने डिसाइड किया है कि अब ये इनको हॉल नहीं करेगा. हॉल मीन्स जब आप किसी को पुल करते विथ फोर्स और एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, खींचना. ठीक है, या फोर्स करना, कोर्स करना. एंड अर्ज देम नो मोर, या बोल रहा है ना तो मैं उनको पुश करूंगा, अर्ज करूंगा. बिकॉज ही फेल टू मोटिवेट देम, ही फेल टू इंस्पायर देम. दैट्स वाई यह बोल रहा है कि अब मैं उनको ज्यादा फोर्स, उनको मैं ज्यादा काजूल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये उनको इंस्पायर करने में फेल हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम. नो लॉन्गर नाउ कैन आई इंड्योर द ब्रंट. ब्यूटीफुल. अब ये बोल रहा है आई कैन नॉट टॉलरेट दिस इंडिफरेंस. ठीक है, जहां तक नॉलेज का ताल्लुक है, अगर इसमें कोई इंडिफरेंस दिखाए, उस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. इंड्योर का मतलब होता है टॉलरेट, बेयर, बर्दाश्त करना. ब्रंट का मतलब होता है शॉक, झटका, जिसको हम बोलते हैं. बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन देयर स्टडीज. दैट्स व्हाई ही सेज दैट अब मैं इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं. आगे बोलेगा ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क्स a full 3 score. He sees so many books opened on the desks that were lying at 6 and 7. यानी बच्चे इनको नहीं पढ़ रहे थे. ठीक है, बस खुली किताबें देखता है इन डेस्क्स पे. A full 3 score, यानी कितनी नोटबुक्स थे इसके पास? They were 60 in total. एक स्कोर 20 होता है, 3 scores 60 बन जाते हैं. यानी 60 नोटबुक्स इसको क्या करने होते? Of several work they have offered me. Offered means presented. यानी presented in the sense इसको as homework मिले थे. The teacher was supposed to correct them and he was supposed to find the mistakes. ठीक है, अब ये 60 बुक्स उसको ऑफर मिले थे, इसको चेक करने थे. I'm sick. He's completely tired. He's sick of all that. ये तंग आ जाता है, ये बिल्कुल टायर्ड और एग्जॉस्टेड हो जाता है. बिकॉज ऑफ several work they have offered me. I'm sick and what on earth is the good of all? I'm sick and
what on earth is the good of it all? Why is he feeling sick? Because the students have done their homework solemnly. They have done their homework in a careless, dirty and untidy manner. That's why ये बोल रहे what on earth is the good of it all? क्योंकि इसमें कोई अच्छा दिखता ही नहीं है. He finds no good in what he is doing. Because इन ऐसे बच्चों को पढ़ाना इसको फ्यूटाइल लग रहा है. What good to them or me I cannot see. यानी he fails to understand this thing. Because इसको कोई चीज अच्छी लगती नहीं है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में. ठीक है, यानी ये लीस्ट इंटरेस्टेड है इन बच्चों को पढ़ाने में. Because he considers it a sheer wastage of time and a futile thing. So inshallah in the next video we'll do the remaining part of the poem. So I'll stop here. Thank you. Bye bye. Take care. Allah.